Assalamu alaikum, dear students. This is unit number 4 and module number 4, writing. And in writing, we are going to discuss the letter of advice. कि letter of advice जो है वो लिखा कैसे जाता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि व्हाट इज़ लेटर ऑफ एडवाइस, ठीक है? लेटर ऑफ एडवाइस जो है इसका बहुत ही मतलब कि पावरफुल किस्म का इफेक्ट हो सकता है उस शख्स की ज़िंदगी पे और उस शख्स की पर्सनैलिटी पे जिस शख्स को आप एडवाइस देने चाह रहे हैं, ठीक है? तो लेटर ऑफ एडवाइस जो है वो उस शख्स के लिए जिसको लेटर ऑफ एडवाइस लिखा जाता है उसके लिए एक इंतहाई वैल्यूएबल पीस होता है और उसके लिए उस शख्स के लिए ये मोटिवेशनल पावर होती है, ठीक है? और ये इस वजह से आपको लेटर ऑफ एडवाइस लिखते वक्त इंतहाई एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए, ठीक है? इसके अलावा लेटर ऑफ एडवाइसेस जो होते हैं उनका एक फंक्शन ये होता है कि वो आपकी मतलब गुडविल और आपका ट्रस्ट जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन यू एंड द इंडिविजुअल हु इज़ सीकिंग योर एडवाइस, ठीक है? तो लेटर ऑफ एडवाइस जो है दे कैन बी यूज्ड एज मोटिवेशनल फोर्स एंड दे कैन मोटिवेट द रीडर्स टू अचीव देयर goal. They can motivate the reader to give up a harmful habit. They can motivate the readers to try something new and even strive for a greater accomplishments or success. अब इस पे ना आपके जो एग्ज़ाम्स हैं चाहे बीए के बच्चे हों चाहे बीएस के बच्चे हों या चाहे एडी के स्टूडेंट्स हो ना, इसमें लेटर ऑफ एडवाइस जो है वो अक्सर मैंने 5-6 पेपर में ये लेटर देखा है कि योर younger brother or younger sister is living abroad for in order to get education. You are supposed to write him or her a letter of advice suggesting him or her to avoid बैड कंपनी एंड फोकस ऑन योर वर्क, ठीक है? तो इस पे ये वाला क्वेश्चन जो है ये अक्सर आया होता है ना आपके एग्जाम में या फिर आपके असाइनमेंट्स में, तो इस वजह से लेटर ऑफ एडवाइस के जो मैकेनिक्स हैं या जो उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं उससे वाकफियत हासिल करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है? तो व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ लेटर ऑफ एडवाइस यू शुड यूज़ प्रोफेशनल वर्ड्स और फ्रेजेस बिकॉज वर्डिंग इज़ एवरीथिंग कि जितना केयरफुल और जितने अच्छे वर्ड्स का आप इंतखाब करेंगे उतना ही अच्छा फिर आपका लेटर ऑफ एडवाइस जो है वो इम्पैक्ट देगा आपके रीडर के ऊपर, ठीक है? टैक्टफुल वार्म एंड जेन्युइनली रिटन लेटर्स ऑफ एडवाइस हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ठीक है? कि लैंग्वेज के अंदर वार्मनेस मतलब कि गर्म जोशी जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, ठीक है? तो लैंग्वेज के अंदर वार्मथ होनी चाहिए, गर्मजोशी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक लैंग्वेज के अंदर गर्मजोशी नहीं होगी उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका रीडर के साथ डेवलप नहीं हो सकेगा। और लेटर ऑफ एडवाइस को इफेक्टिव बनाने के लिए यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द रीडर. So now let us please discuss some tips about writing a good letter of advice. First of all, there are certain situations when you are requested to give advice कि जब लोग आपसे एडवाइस मांगते हैं, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में when you are being asked for advice you should respond very quickly, ठीक है? But not in the haste or hastily manner, because you should think before giving the advice that what should be the proper advice in the situation for which that person has contacted you. Now because that person has contacted you for advice, he has sought your advice, it means that that individual has full trust on you कि उसको आप पर एतबार है, ठीक है? तो उसके एतबार को आप ठेस ना पहुंचाएं और रिस्पॉन्ड करें. इफ़ यू हैव द एडवाइस, अगर आपके पास अच्छी एडवाइस है, आप अच्छा मशवरा दे सकते हैं, तो फ़ौरन जो है वो एडवाइस अगले बंदे को बजरिया लेटर आप मुहैया करें. तो जो लहजा है जब आप लेटर ऑफ एडवाइस लिखेंगे, ठीक है, चाहे वो जिस सब्जेक्ट में भी आपसे एडवाइस मांगी गई है, यू शुड बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव एडवाइस. तो आप अपना बेहतरीन मशवरा दें. टोन जो है, जो लैंग्वेज है आपकी, उसे आपकी टोन रिस्पेक्टफुल रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? और हेल्पफुल आपकी टोन होनी चाहिए कि आप अगले बंदे की मदद कर रहे हो, ना कि उसके ऊपर मतलब कि तंज कर रहे हैं और ना ही आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है? बी केयरफुल इन अपीयरिंग जजमेंटल. अब हम लोग बीइंग पाकिस्तानी वी आर वेरी जजमेंटल, ठीक है? हम फ़ौरन ही देख कर जनाब जो है वो लोगों के बारे में जजमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं कि ये तो है ही ऐसा, इस किस्म के लोग सारे होते ही ऐसे हैं, इस नस्ल के सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है? अब ये जजमेंटल जो एटीट्यूड है ये इंसान को ले डूबता है, ठीक है? तो बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग जजमेंट्स के, अवॉइड करें
ना तो किसी के ऊपर मतलब क्रिटिसिज्म करें और ना ही डायरेक्टली अज्यूम कर लें कि भाई ये तो होता ही ऐसे है ना, ठीक है। तो थिंक वेरी केयरफुली एंड प्रोवाइड योर एडवाइस टू दैट इंडिविजुअल हु हैज़ sought your advice. एंड इफ देर इज अ सिचुएशन कि एक ऐसी सिचुएशन है या ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे यू फील दैट यू आर अनेबल टू गिव एडवाइस, देन यू मस्ट सजेस्ट समवन एल्स हु इज एक्सपर्ट इन दैट एरिया to the individual who is seeking your advice. So it will be very wise not to involve yourself in something that you have absolutely no idea about. Okay, so you should refer that individual to someone who knows much better about that subject. Okay, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो होती है, ठीक है, अगेन जजमेंटल लैंग्वेज या फिर सख्त किस्म के जो अल्फाज होते हैं उसको अवॉइड करें अपनी एडवाइस में, ठीक है। और सिर्फ उसी इशू पे एडवाइस दें जिस इशू पे आपकी एडवाइस मांगी गई है, ठीक है। और कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट, कि टू द पॉइंट आपकी एडवाइस होनी चाहिए, ना कि आप लंबी चौड़ी छोड़ना शुरू कर दें। एंड इफ समवन टेक्स योर एडवाइस, मेंटेन अ टोन ऑफ एप्रिसिएशन विदाउट एनी हिंट और फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी। कि अगर कोई शख्स आपकी एडवाइस ले लेता है और आप देखते हैं कि यार ये मेरे मशवरे पे अमल कर रहा है, तो फिर अपने आप को ऐसे प्रेजेंट ना करें कि जैसे यू आर द वन हु इज़ नो इट ऑल, ना मिस्टर और मिस नो इट ऑल, कि जिसको हर चीज़ का इल्म होता है। तो ऑलवेज बी हम्बल्ड, कि लोगों के सामने हम्बल तरीके से उनके साथ पेश आएँ, ना कि ये समझें कि आप जो है वो सुपीरियर हैं और अगला बंदा जो है वो इन्फीरियर है। और अगर आपको मशवरे की ज़रूरत है तो इस किस्म के बंदे से मशवरा लें कि जो कि ट्रस्ट वर्दी हो, जिस पे आपको एतबार हो, और जिसके बारे में आपको पता हो कि वो आपकी रिक्वेस्ट को कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट रखेगा, लोगों के सामने उसको रिवील नहीं करेगा, ठीक है। और जब कभी आप किसी को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट लिखें फॉर एडवाइस, तो जब आपको रिप्लाई रिसीव होगा तो थैंक्स का लेटर जो है वो लाजमी, या फिर लेटर ऑफ अप्रिसिएशन जो है, कि कि चाहे एडवाइस अच्छी है या अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको पसंद आती है या आपको पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी इफ़ यू गेट एडवाइस, अगर आपको एडवाइस मिलती है, देन यू शुड राइट अ लेटर ऑफ थैंक और लेटर ऑफ अप्रिसिएशन टू दैट इंडिविजुअल हु हैज़ रिटन यू द लेटर ऑफ एडवाइस। अब आगे एक सैम्पल लेटर ऑफ एडवाइस आपके साथ शेयर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने जो एक्सप्रेशंस हैं एडवाइस के, वो एक्सप्रेशंस जिनको यूज़ किया गया है टू गिव एडवाइस, उन पे आपने फोकस करना। अब ये एक्सप्रेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि आपको भी ये लेटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम में हो सकता है इस सेमेस्टर में ना, अगले सेमेस्टर में आ जाए, ठीक है। तो लेकिन लेटर ऑफ एडवाइस आता है, ठीक है। सो ये जो एक्सप्रेशंस आपको दिखाए जाएंगे, इनसे फेमिलियरिटी हासिल करना, कि अगर लेटर ऑफ एडवाइस आता है तो आपको इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करना होगा अपने लेटर के अंदर, ठीक है। तो हेलो एंड वेलकम टू स्प्रिंग सेमेस्टर ऑफ द फंक्शनल इंग्लिश। एज योर ट्यूटर आई बिलीव दैट आई हैव a wealth of information to share with you, and I hope that you may benefit from my knowledge and experience, ठीक है। अब यहाँ पे पहली एडवाइस है कि ट्यूटर की बात जो है उसको सुनना है आपने, ठीक है। आई बिलीव दैट आई हैव अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर विद यू, तो इसके अंदर इट सेल्फ एक एडवाइस रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपने टीचर की बातों को ध्यान से सुनना है। ऑल्दो बीइंग एन AIOU स्टूडेंट allows you a great deal of freedom, बट विद दिस फ्रीडम कम्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन एडवाइस है कि ठीक है, आप ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, घर बैठ के पढ़ते हैं, मर्जी से वर्कशॉप अटेंड करते हैं, मर्जी से वर्कशॉप अटेंड नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन ये है कि फ्रीडम जब आता है तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, कि आखिर में जब एग्ज़ाम आएगा तो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम यू हैव टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। तो अगेन एडवाइस है कि स्टडीज़ को सीरियस लें, ठीक है। इफ़ यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन देन दिस क्लास इज़ फॉर यू एंड सक्सेस विल फॉलो। इफ़ यू आर अ सक्सेस सेल्फ मोटिवेटेड, कि अगर आपके अंदर एक मोटिवेशन है पढ़ने की, तो फिर ये क्लास और ये सब्जेक्ट और ये मतलब कोर्स जो है ये आपके लिए है। The most important aspect of this class is communication with your classmates and with the instructors or tutors in the tutorial meetings and via email. I strongly suggest, अब यहाँ पे ये एडवाइस का एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, जिन एक्सप्रेशंस की मैं बात कर रहा था ना, आई स्ट्रांगली सजेस्ट, तो ये एक्सप्रेशन नोट कर लें आप अपने पास, आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू शुड, यहाँ तक ये सारा एक्सप्रेशन है एडवाइस का। अटेंड द ट्यूटोरियल because if you have questions about an assignment or a unit you can ask your classmates and the tutor to help you, ठीक है। अब ये आपकी पहली एडवाइस थी। दूसरी
जो एडवाइस का एक्सप्रेशन साथ ही शुरू हो रहा है। कीप इन माइंड दैट कि इस चीज़ को अपने जहन में रखें, अगेन एडवाइस है यकीनन कि इसके बाद एडवाइस आएगी, दैट बीइंग एन AIOU स्टूडेंट मे बी न्यू एक्सपीरियंस फॉर यू बट आई रिकमेंड दोबारा से एडवाइस का एक्सप्रेशन आ गया। आई रिकमेंड दैट keep the communication open with everyone in the tutorial sessions as it will help you to build a working relationship with everyone in the class। ठीक है, तो आई रिकमेंड, आई सजेस्ट, आई स्ट्रांगली सजेस्ट एंड आई एडवाइज यू। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस अब तक आ चुके हैं। इन एक्सप्रेशंस को आपने जहन में रखना है और इनको आपने यूटिलाइज करना है व्हाइल राइटिंग योर लेटर ऑफ एडवाइस। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, अगेन इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस के कामयाब होने के लिए, अब कामयाब होने के लिए जब उसने कहा है तो उसके बाद वो नसीहत करेगा ना। इन फंक्शनल इंग्लिश कोर्स यू विल नीड टू कंप्लीट, यू विल नीड टू अगेन एडवाइस है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस, यू विल नीड टू कंप्लीट ऑल योर असाइनमेंट्स to the best of your ability and by completion date. It is advisable again, an expression of advice. It is in front of you, please note it. It is advisable to either personally hand in or mail each assignment to your tutor in order to get feedback on your work. The comments and suggestions from the tutor will help you perfect your work before. Okay, one of the thing that you should know is that I like the assignments turned in on time. One of the thing that you should know, ठीक है, it is again advice. One of the things that you should know कि एक वो चीज़ कि जिससे आपको इल्म होना चाहिए वो ये है, it is expression of advice. I don't like getting excuses for late work, so if your assignment is going to be late, I instruct you again advice to please be honest about the reason. Better still, I counsel you is again expression of advice to turn your assignments in on time. This goal can be accomplished if you organize your study schedule effectively। ठीक है, this goal can be accomplished if you ये जो है ये भी expression of advice है। this goal can be accomplished if you, कि ये मकसद हासिल हो सकता है अगर आपके पास ज़ाहिर है आगे नसीहत ही हो सकती है ना। It is equally important, again expression of advice, to write your assignments yourself. I urge you, ठीक है, मैं इस बात पे जोर देता हूँ, expression of advice, to do each question yourself. Refer to your book and the educaset often, and do not be afraid to collect interesting material from several different sources. Just be careful that the information you choose is correct and relevant. Just be careful कि इस चीज़ की एहतियात करें। Again, it is an expression of advice. Make sure that your question members are correct. Sorry, question numbers are correct. Make sure इसके इस बात की यकीन दहानी करें। Again, it is an expression of advice. Proper margins on the left and right are given and have good paragraphing, etc. etc. In my opinion, again advice. The use of correct spelling, grammar and punctuations are equally important to your success in this course. I suggest that again it is an expression of advice. तो अब आप देखें कि इतने सारे expressions of advice जो है वो हमने देखे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। अब ये नीचे दोबारा बी प्रिपेयर, डू नॉट बी अफ्रेड। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड अगेन इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एडवाइस। ठीक है, तो ये वो सारे एक्सप्रेशंस हैं कि जिनको आपने जहन में रखना है और इनको आपने जब आप लेटर लिखेंगे तो उस वक्त आपने इनको यूटिलाइज करना है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी है इसी के ऊपर कि जो भी आपको ऊपर लेटर पढ़ाया गया है, ठीक है, उसी में से आपने जो हिडन एडवाइस है उसको ढूंढना है और उसको आपने लिखना है। ठीक है, पहला सेंटेंस लिखा, आई बिलीव दैट आई have a wealth of information to share with you and I hope that you may benefit from my knowledge and experience। तो उसका मीनिंग नीचे लिखा है कि मिस्टर फारूक जो कि लेटर लिख रहा है इज़ एक्चुअली एडवाइजिंग स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन, कि फोकस करें। अब दूसरा सेंटेंस है, इसका मीनिंग आपने खुद गैस करना है। ऑल्दो बीइंग एन AIOU स्टूडेंट allows you
अ ग्रेट डील ऑफ फ्रीडम बट विद दिस फ्रीडम कम्स अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका मतलब तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इफ़ यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन देन दिस कोर्स इज़ फॉर यू एंड सक्सेस विल फॉलो। इसका मतलब मैंने मेरे ख्याल से डिस्कस नहीं किया था, तो इसका मीनिंग अब आप जो है वो खुद गेस करें। एंड इफ़ यू राइट इट इन कमेंट सेक्शंस आई विल बी हैप्पी टू लुक एट योर आंसर्स, ओके। अच्छा, अखबार के अंदर भी एक सेक्शन होता है जिसको लेटर ऑफ एडवाइस या फिर एडवाइस कॉलम्स कहा जाता है। इसके अंदर लोग जो है वो जो एवरी डे यानी कि डेली लाइफ के जो इश्यूज होते हैं उन पे लेटर्स लिखते हैं और लोगों से मशवरा मांगते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात जो उनके इश्यूज हैं उन पे लोगों की जानिब से सीरियस किस्म का इशू जो है वो सीरियस किस्म का मशवरा मिल जाता है, और बाज़ औक़ात लोग उनका फ़न उड़ाते हैं। तो एक जो सैम्पल लेटर ऑफ एडवाइस जो कि अखबार में छपा है उसको हम रीडिंग देते हैं, ठीक है, आपके सामने। नाउ रीड द लेटर दैट वाज सेंट टू द न्यूज़पेपर फॉर एडवाइस। डियर आंट, डियर एग्नी आंट। अब ये एग्नी आंट जो है ये रियलिटी में कोई किसी का नाम नहीं है, रादर एग्नी का मतलब तकलीफ होता है, ठीक है। तो ये शख्स किसी तकलीफ में और ये अपनी तकलीफ के नाम खत लिख रहा है, ठीक है। अब वो लोग जो कि रेलिवेंट होंगे, जो कि इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते होंगे उसकी तकलीफ से, वो यकीनन इस शख्स को कोई मशवरा देंगे, ठीक है। माई डॉक्टर सेज दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम arthritis in my hands. It is painful to work at home or at office type, and I cannot do as much gardening as I would like to do. The doctor has prescribed me pills, but I do not like to fill my body with drugs. I do take cod liver oil as I have heard that it is good for joint pain. Can you recommend some things that aren't drugs, please? Secretary in पेन। अब ये वो अपने आप को नाम देता है सेक्रेटरी इन पेन का, ठीक है। और वो आंट एग्नी यानी कि अपनी तकलीफ के नाम खत लिख रहा है। और अब ये एक न्यूज़पेपर में छपा है। अब उसके बदले में उसको जो रिप्लाई मिल रहा है किसी दूसरे शख्स की जानिब से, जो कि अगले दिन या उससे अगले दिन ये जब भी उसका लेटर पढ़ा गया तो उसको रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। वो रिप्लाई पढ़ें, बड़ा मज़े का रिप्लाई है। तो रिप्लाई हम पढ़ते हैं। डियर सेक्रेटरी इन पेन, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील and I am going to suggest that you look at some kind of alternative therapy, in particular the use of magnets. Although copper bracelets have long been known for helping sufferers of arthritis, arthritis magnotherapy is becoming increasingly popular as form of natural pain relief. In fact, using higher strength magnetic bracelets do have beneficial effect on pain relief. It is believed that application of strong magnetic force to blood improves circulation, therefore allowing the oxygen to be transported around the body more easily and waste products to be removed easier. It is this rebalance of body's pH that seems to result in less pain experienced. It is safe, drug-free form of alternative medicine that is fast gaining support of doctors around the world. Considering the ongoing cost of painkillers, the magnetic bracelet or wristband is a relatively cheap alternative. Sincerely, Aunt Agony। ठीक है। अब ये लेटर ऑफ एडवाइस जो उसने अखबार में लिखा था ये उसको उसका रिप्लाई दिया गया है, ठीक है। तो that is all for letter of advice. I hope that you have understood the mechanics of writing a letter of advice, and you have learned that what is its significance and which expressions are there that we can use, ठीक है, to write a letter of advice. Thank you so much.